इनका एक कैमियो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था जिसका नाम था गुलाबो। I told my parents I'm packing my bags and I'm going to Bombay, and they were like, "But we're not allowing you." I said, "I'm not asking you. I'm just going." Then do you remember your first audition and your first show? I had done a show with my theatre group in village में ले गए थे. That's the first time I saw a village. Any funny pickup line tried on you? There's a funny incident. I used to go and buy my sabjis. तो कहते अरे पैर आ गई सब्जी खरीदने के लिए. Chatterbox. Hello and welcome to another episode of Chatterbox presented by Provo, which is India's biggest opinion trading platform. हमारे शो में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी से जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, अपनी छोटी बड़ी स्क्रीन पर अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ इस शो में आप जानेंगे उनके बारे में कुछ चटपटी बातें, कुछ अमेजिंग से फैक्ट जो शायद अभी तक आपको नहीं पता है। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी आज की सेलिब्रिटी से। आज की जो हमारी सेलिब्रिटी है वो बहुत ही लव्ड और फेमस एक्ट्रेस है जिन्हें आपने बहुत सारे शोज में देखा होगा जैसे कि कुसुम, moneyben.com, और इनका एक कैमियो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था फ्रॉम द शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसका नाम था गुलाबो। लेकिन अभी तक सिंपल का मोस्ट लव शो रहा है शरारत। तो चलिए मिलते हैं सिंपल कॉल से। Hi Simple. Hi. Welcome to Chatterbox. Thank you. So Simple, as we all know that you're a Kashmiri. Yes. Basically from Kashmir or Mumbai itself. My background is Kashmir. My mother was born and brought up in Kashmir. My parents have studied in Kashmir. My sister was born in Kashmir. My relatives were all in Kashmir. And then I was born and brought up in, actually not even Delhi, Ghaziabad. I mean, a small town. Yeah. It's like NCR, now it's Delhi. Yeah, but I've studied in Delhi. But yeah. So tell me one thing, how acting happened? I always wanted to act right from the childhood. It was something I enjoyed performing. As far as I remember, the only thing that I wanted to do was acting. It was just in me. I mean, at that time when you're a child, you want to become famous, you see fashion. So you're attracted to it because of glamour and fame. But as you grow, you realize that you're attracted to it because you enjoy feeling, because you enjoy performing, because it's art. And but my initial exposure to acting was, when you see heroines on television, you want to be like that. I used to give my own interviews, like I think all kids do that. So yeah, I just remember that I always knew my parents would never allow me, and I'll come to Bombay and my dad's going to come with me. I used to get these dreams, like literally these dreams, and exactly that's what happened. I told my parents I'm packing my bags and I'm going to Bombay, and they were like, "But we're not allowing you." I said, "I'm not asking you. I'm just going because I know I don't get permission, but I'm just going." They were startled, and I said, "I have to go." They said, and Dad said, "I'll come with you." I said, "I knew." I said, "But why are you coming?" He said, "For moral support." No, he said, "I'll support you." I said, "Well, you can't support me, na." He said, "No, I'm coming for moral support." I said, "But I don't need the moral support. I have to go and give audition. You don't even know the city." But he came with me. So yeah, we took a train. It was 2nd of March, and I was here by 3rd of March. So that's how it happened. Yeah. Then do you remember your first audition and your first show? No, I don't remember because it was not in Bombay. I remember I had done a show with my theatre group in village में ले गए थे. That's the first time I saw a village. Oh no! I didn't understand what the close-ups are. मुझे इतनी difficulty होती थी learn करने में close-up में इधर मत हिलो इतना tight close. तो गांव में shoot कर रहे थे, electricity नहीं थी. I remember washrooms भी नहीं होते थे. That was the first time I realized यहाँ तो washroom भी नहीं है. मतलब क्योंकि हम कभी गांव गए नहीं थे. हमने 15 दिन शूट किया था, बिल्कुल काले भूत बन के वापस आए थे हम, और काफ़ी कुछ लर्न किया क्योंकि मेरे थिएटर के लोग थे तो मेरा कंफर्ट लेवल था. उधर से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई. फिर मैंने 1-2 शोज वाइल आई वाज इन कॉलेज आई वाज डूइंग, तो मेरी ट्रेनिंग वहाँ हो गई थी. बाय द टाइम आई केम हियर टू बॉम्बे, I knew my work. Like I knew my close-up, I knew how to give my audition, how to learn my lines in little bit time. So I came and I quickly got work. I started shooting for Futul where I had no dialogues. I was not given any dialogue. I was like a sidey feature and I used to cry every day that I'm so talented and these guys are not even using me. Anyway, then I got put
Kusum from that show, and then I did Shararat, and yeah. So how was the feeling जब पहली बार आप सड़क पर निकले हो और लोगों ने पहचाना हो? तो मैं बस में जाती थी और जब मुझे लोगों ने पहचाना शुरू कर दिया तो मैंने कहा वाओ, अब मैं बस में नहीं जा सकती, अब मेरी प्रोग्रेस हो रही है। मतलब मैं शूट भी बस में जा रही थी बिकॉज वो लिमिटेड पैसे होते थे। आप अभी कॉलेज से आए हैं एंड आपके पेरेंट्स से आपने पार्ट टाइम जॉब करके पैसे लेके यू कम हियर, सो यू हैव लिमिटेड फंड्स। उसमें आपको अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है, तब तो पोर्टफोलियो होता था अब Instagram पिक्चर्स ही निकालना, उसके पैसे होने चाहिए, पीजी का रेंट करना है, खाने पीने का करना है, तो बाहर भी नहीं खा सकते, आपको घर में बनाना है। वो सब के बीच में ऑब्वियसली आप सिर्फ बस अफोर्ड कर सकते हो। So then I started taking autos and I was like, wow, this feels so good. I remember initial days of Shararat, ekdam initial days of Shararat, my co-actors would tell me, why do you come in auto, why not car? तब तो मैंने कार ली नहीं थी। तो I said, but I feel that I progressed in life because मैं तो बस ले रही थी with so much of simplicity कि I'm fine with auto, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। Yeah, so that was the first time when people started recognizing me, and of course then you took a car, yeah. So simple way Or I have to, there's a funny incident. I used to go and buy my sabjis. तो कहते अरे पैम आ गई सब्जी खरीदने के लिए, फोर बंगल मार्केट में आती थी बिल्कुल मेकअप लगा के कि अभी मैं शूट से वापस आई, मुझे सब्जी खरीदी, सब्जी तो खुद ही बना ली ना पीजी में, यू कांट हैव अ हाउस हेल्प, दो बाय दैट टाइम I could afford and all because I was working, तो अपनी सब्जी बनानी होती, so it was very funny because the character of Pam was so hoity-toity, yeah, so hoity-toity, but she my sabjis. That was cute. You feel वो कभी मीडिया में आया हो कि नहीं तब इतना सब कुछ नहीं हो रहा था ना कि आप all that was on there. So as we all know कि इंडस्ट्री में रिलेशंस बहुत फ्रेजाइल होते हैं, but I keep seeing your Instagram post still with your Shararat family. I'm always in touch with all my friends. I make a lot of friends, my older friends, my newer friends, my latest friends, my very close friends, but I love my friends and I have a lot of friends, and my relationship with my friends is not fragile. It's a give and take of love. You just enjoy giving the love, and what you get in return is only love, the energy of love, and that's how I see relationships, and that's how I grow with everyone. So do you think कि जो पहले की फ्रेंडशिप होती थी, जो इनिशियल डेज में हमारी फ्रेंडशिप हुई है और जो पहले के रिलेशनशिप होते थे टीवी शोज़ में जो हमारे एक्टर्स के साथ बनते थे, वो अभी थोड़े से मिसिंग है? नहीं, I don't think so at all. I mean it depends on people to people. But क्या होता है कि जब आप नए आते हैं, जब आप यंग होते हैं, you are more open to friendships, you have more time for each other, तो आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. By the time you get married, आप अपने रूम में ही रहते हैं, आप रूम से बाहर नहीं निकलते. It's a very sad thing, and you will probably not have time to make friends. You probably not be interested also. Your priority becomes your family, your own close people. Yeah. So because of that, आप की पुरानी फ्रेंडशिप स्टे करती है, नए बहुत कम बनते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता. Wherever I go, I think I just attract friends. So Amazing. And you think कि अभी बहुत बदल गया? I'm not talking about the friendships. Yeah. Like working pattern, what difference you see पहले? I see पहले बहुत ज़्यादा एक्टिंग होती थी, अभी थोड़ी effortless है, अभी थोड़ा नेचुरल एक्टिंग है, which is very good. Especially जब से वेब आया है, that's a relief. There is also another thing that I've noticed. पहले लोगों को जो pretty faces होते थे वो ही मतलब लाइमलाइट में आते थे, अभी कैरेक्टर बेस्ड फिल्म्स बनती हैं, वेब शोज बनते हैं, तो देर इज़ सो मच वर्क फॉर एवरीबडी हु इज़ अ कॉमनर ऑल्सो, हु इज़ कॉमन लुकिंग पर्सन ऑल्सो. यू माइट नॉट इवन नीड द सपोर्ट ऑफ मेकअप, it's that natural and that real. That's real. So that's a very good difference and a big difference that's come from, I think, the Western world, and I'm quite enjoying this state of affairs. Yeah, that's really nice, simple. But tell me one thing, don't you think कि industry, especially अपने television, थोड़ा सा typical रहा है कि like typical रहा है because television mostly caters to I would say housewives and people living in town, villages. मतलब जब मैं शो कर रही थी तब यंगस्टर्स भी टीवी देखते थे. अब डू वी वॉच टीवी, डू आई वॉच टीवी? नो, आई डोंट, बिकॉज इतना एक्सपोजर आ गया है विद वेब. तो मतलब मैं रियलिटी शो देख सकती हूँ, बट आई वाज आल्सो वॉच वेब और आई माइट जस्ट वॉच समथिंग ऑन माई फोन.
तो ऑडियंस बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. ऑफ कोर्स देयर इज ऑडियंस फॉर टेलीविजन आल्सो व्हिच इज ह्यूज बट ऑडियंस हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो फर्क तो आया है. एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द शोज आर वेरी लाइक ओल्ड स्कूल, वो चलते हैं लाइक अ स्टे होल्ड बस. इट वर्क्स बिकॉज वो जो ऑडियंस बैठे होते हैं उसके दिमाग में ऐसे स्टे कर जाता है कि हाँ. तो दैट दोज आर मीडियम्स यू कांट, I mean, you can't do anything about it. And I don't know when it is changed. But when they try to make a normal show where the zooms and stays and hyper, I would say, tragic events don't happen, the shows don't really work. You know, I mean, shows don't really work. They want like drama. that. That's Lot they want of it. Unless it's like comedy. Yeah, they want a lot of drama. Yeah. They want stage and hold. This one thing I have seen and learned in टेलीविजन. क्या कोई सीन उड़ के ऐसे नहीं जा सकता, उसको बहुत बड़ा बनाना होता है. वो बड़ी तवज्जो देनी पड़ती है हर एक एक्सप्रेशन को, हर एक लाइन. ओके, सो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपने अभी तक नहीं किया हो बट इट इज लाइक दिस विश के यार ये वाला कैरेक्टर मुझे ऐसा कुछ प्ले करना है, या किसी और ने किया हो? I think I would like to play a role of a rock star, somebody who's a singer and does shows or performs in band, or an artist who's a theatre artist, okay, or a painter who cannot speak. Her only expression is art. Wow. और a writer. इनमें आपको खेलने को बहुत मिलता है, इनमें आपको सोचने को, समझने को, महसूस करने को बहुत मिलता है. ऑल्सो आई फील जब भगवान आपसे एक पर्टिकुलर चीज़ ले लेता है, लाइक सुनने की शक्ति या देखने की शक्ति या बात करने की शक्ति, तो आपकी महसूस करने की शक्ति और इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाती है. यू नो, लिविंग अ लाइफ एंड हाउ अ कैरेक्टर इज गोइंग टू थिंक इज समथिंग दैट आई हैव नेवर डन बिफोर. बहुत मेरे लिए बहुत अलग अनुभव है. तो मुझे लगता है मैं आई वुड वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दैट. या जैसे अभी मैं कल ही फिल्म देख के आई हूँ, बॉबी देओल का रोल देख के आई हूँ. व्हाट्स अ फिल्म कॉल्ड? एनिमल. क्या दी एनिमल में अभी मैं बॉबी देओल का कल ही किरदार देख के आई हूँ. एंड ही डजंट स्पीक but it's so powerful. Yeah. Oh my God, his wrinkles are showing everything. His eyes speak. There is so much of strength in the character. मतलब मैंने कहा wow, what a character to portray. और डायरेक्टर ने ऐसा काम निकलवाया है. तो इस सब प्रोसेस में एक्टर को सीखने को बहुत मिलता है. You know, you learn a lot. There's more exposure. You become wiser as an actor, and we all want to become wise as an actor. We all want to grow. So yeah, doing role that you've not done before, I feel is the only way to grow. Very true. And that happens rarely in television though. Yeah, but देखो टेलीविजन में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपको बहुत कम टाइम में किस तरीके से लाइन लर्न करके डिलीवर करनी है. रोज़ सुबह सेट पे आना ही है, नो मैटर व्हाट हैपन्स. आप बीमार हैं, आपका मन ठीक नहीं है, आपके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है, बट यू हैव टू ऑलवेज रिपोर्ट ऑन द सेट. और ये ट्रेनिंग जो है ना, आपको टेलीविजन ही दे. इफ़ आई एम डूइंग अ फिल्म आई विल नॉट बी स्कैर्ड बिकॉज आई हैव जस्ट डन सो मच वर्क ऑन टेलीविजन. तो वो एक स्कूलिंग है, जबकि दिमाग की बहुत सही हो जाती है कि अभी लाइन मिली, अभी डिलीवर करना है. You know, and yeah, I love that fact. Also, it gives people that everyday work, that motivation to go to everyday work. So there are good things also about it. I feel there are lots of good things about television. Yeah. Like if anybody asks me, so I always say that television is my first love, because when I came to Bombay, television gave me money to run my house, to eat food. I mean, अगर मैं सिर्फ फिल्म्स के लिए ट्राई करती तो शायद मैं सर्वाइव नहीं. I just wish थोड़ी शो जो नेचुरल भी है वो भी बनना शुरू हो जाए, जो बहुत रियल है. तो we'll have different variety of content. And we are getting in web now. Well, yeah. At least, yeah, something is there. Okay, so as you were working so well as an actor, Yeah. okay, so what was the thought that how come you suddenly decided and started up your restaurant? So it wasn't sudden. I always wanted to do something that I enjoy doing apart from acting, so that I don't have to say yes to any role just because you know अब पैसे खत्म हो गए हैं तो भाई हम मतलब joking, like you want to earn a lot, Yeah. and that is why you are saying yes to a show. So I didn't want to be in that position कि भाई मैं कोई भी रोल कर रही हूँ. I wanted to be in a position that I am able to select my role without being under the pressure of finances. अच्छा ये शो खत्म हुआ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो नहीं होना चाहिए. Of course acting से तो मुझे बहुत प्यार है, but after working so many years, मुझे 10-12 साल हो गए थे, and I'm like, what next? I mean, apart from this,
मैं बार बार सेम रूल नहीं करना चाहूँगी, या मैं बहुत ज़्यादा गैप नहीं चाहूँगी मेरे काम के बीच में कि महीनों तक मैं वेट कर रही हूँ राइट रोल के लिए. So I thought I would want to have a more settled business, something that I enjoy, which is connected to my personality. I love beauty. और हमने रेस्टोरेंट बनाया, सबसे पहले सोचे कि हम we make a piece of beauty. एक छोटा सा इटालियन रेस्टोरेंट हम खोलेंगे, एक कैफ़े खोलेंगे जो जैसे यूरोप की विलेजेस में होता है. व्हेन पीपल गो इन द विलेजेस, यूरोपियन विलेजेस इज वेरी कैजुअल कैफेज विद very lazy vibe and and cozy vibe, and neighborhood cafe hota hai na, people, friends coming, gathering there, a place where you can in the morning sit and write, read your book, talk to friends, go back with happy memories, acha khana, achhi coffee, right kind of music. Everything would go with that frequency, क्योंकि मुझे उस तरह की लाइफ पसंद है. मुझे बहुत वक्त कैफे से बिताना अच्छा लगता है. तो आई थिंक why not open something which gives people this beautiful vibration, and I earn money through it, chatting with different kind of people, coming there, serving them good food, and somehow we all want to do at some open a cafe at some point of time. So it started from that. मैंने travel करना शुरू किया, तो मैंने when I visited the villages of Europe, I realized they're so personal. You want to be there, you want to talk to the owner. Sometimes the owner make their own food, sometimes the owner serve. So it came from that space कि चलो let's bring that thing to Bombay, to अंधेरी, and जो घर के पास में है, हमें easy भी होगा, मैं acting भी कर सकती हूँ और मैं ये रेस्टोरेंट भी देख सकती हूँ, and let's explore and see where the journey takes you. So me and my friend Aditi, we were feeling the same thing. वो मेरे साथ शरारत में थी, तो we both wanted to do, and then another friend of ours, Vatsala, she joined. So we three girls opened beautiful cafe, and where people used to love coming, enjoying, reading, writing, eating, drinking. Especially the Christmas time, because Christmas पे homemade cafe इतना खूबसूरत लगता है. One of my cafe, the first cafe, छोटी सी जगह है, उसमें इतनी वाइब, विंटर वाइब है, इतनी यूरोपियन वाइब है कि आप उस कोने में बैठते हैं तो it transport you to the bylanes of some village in Italy or some village in France. Yeah. That's the vibration we wanted to create. Yeah. So actually, I'll tell you, it's been a while that I'm coming to 1 BHK, and I personally really love this place. And I've always seen it's like, like I'll be honest, now people are opening their restaurants thinking it should be Instagrammable. Like, Yeah. it's a new term. Yeah. But your cafe, I think since the beginning, it is. And I wanted to start, beauty is the first thing that came to my mind. So I wanted to make beautiful places. So it had to be Instagrammable. And by the way, when I started our restaurant, Instagram was always it was I think. I know. Yeah. तो खूबसूरत जगह को देख के खूबसूरत महसूस करता है. कस्टमर या कोई भी who's passing by wants to sit by. Yeah, definitely you have the vibe. You don't we have. So my next question is that you think managing hectic schedules of acting was easier or managing with staff and restaurants is easier? So in restaurants, I have partners with me. So हमारा काम designated है. Of course, there's a lot of work, but acting में जैसे सुबह से उठ के आना पड़ता है, full night shoot करनी पड़ती है, बीमार हो तो काम करना होता है, वो प्रेशर नहीं है हमें. यहाँ अलग प्रेशर होता है, business up and down होता है तो प्रेशर होता है. But I'm not the only person to take the pressure. There are my partners also there. We are 4-5 of us, and उससे motivation बनी रहती है. And you never take so much of pressure. Acting is a lot of physical work, but I think I enjoy both. But I think my first love will always be acting. Once an actor, always an always. I die to let a swarm in front of the camera. It's just something else. It just gives you a high. Yeah, and applying makeup every day, going for shoot, getting into that routine, going for workout in the morning itself, it's just energizes something in you. Everything comes in that routine. Also that you're able to perform in front of a camera, learn your lines, it just excites me. And it would excite any artist. Any artist, definitely. Yeah. It's so beautiful, actually, the whole thing, even when you pack up late, but and get up early. But I'm lucky that then I have a restaurant that I can come back, eat my food, relax, and then go back home. I used to do that last show जो मैंने किया था, तो मैं बहुत बार पहले 1 BHK आती थी, क्योंकि मेरे रास्ते में पड़ता था जब मैं घर वापस आती हूँ. मैं यहाँ पे ऐसे डिनर करके जाती थी, सो देख के जाती थी काम, and then I have to go home. So it's like a second home. Of course, my places are my home. We feel home. Our staff is our family, and there's a lot of love in all our places.
तो जब खाना बनता है अंदर किचन में, तो there has to be good energy, happy love energy, because that is what is going to that is what a customer will receive. So yeah. That's a beautiful thought. Thank Okay, you. so with this thought, I want to ask you some questions. It will be kind of a rapid fire kind of a thing. So let's do that. Yeah. Ready? Yeah. सिंपल सवालों के जवाब दे, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं प्रोवो, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी ऐप की डिटेल ले सकते हैं, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आप देकर जीत सकते हैं लाखों रुपए के इनाम। तो इंतजार किस बात का है, जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए। चलिए कंटिन्यू करते हैं सिंपल के साथ। एनी ऑफ योर फ्रेंड्स अनलॉक योर फोन? Yes, a lot of people on my set used to do that. बहुत लोगों को उसका पासवर्ड पता होता था, बिकॉज सब कुछ शूट करना होता था, फोटो शूट करना है, वीडियोस करना है, तो Yeah, it's normal for you. it's normal for me. I have no secret there. So simple, which is your favorite dish in your own restaurant? Lots of them. I like pastas here, I love pizza here. Me too. The desserts here are to die for. I know. Oh my god, like the Biscoff cheesecake is so good that I look at it and I avoid. Yeah. Tiramisu is amazing. Yeah, tiramisu is like no to die for. Thank I you. know how it is. Thank you. Okay, so have you ever? Yes, sangrias. Our sangrias are the best sangrias in Mappe. You have to have them. And tried. So have you ever been to any other restaurant and liked the dish and copied it? No, I don't think so. Yeah, I knew it. no, I have nothing to do with food. It's actually the chef who makes it, and I always tell him that हमारे खाने की अपनी uniqueness होनी चाहिए. आप जो चीज़ सबसे अच्छे से दे सकते हो वो present करो, you know. तो we just tell him we want these things. हमें मेन्यू में चाहिए, हमें ऐसे चाहिए. कभी कभार हम बोल देते हैं कि हमें इसकी presentation change करनी है. Mostly there is not an issue. Presentation is a very important thing, though. ध्यान देते हैं. Yeah, but sometimes if I like some healthy dessert, or I would say some kind of coffees I like, I would come to my staff and I'll tell them, you know, इसको ऐसे बना के देखते हैं. Let's try and making this. This is very Instagrammable. तो वो सब चलता रहता है. खाने का तो कभी नहीं किया हमने. Okay, 3 things that you would like to change about your life. Nothing. My life is good. That's amazing. Yeah. Okay, if you could have unlimited supply of one thing, what it would be? Good roles, and good roles. First, I've already asked this. In fact, you have answered this already, but still, because it's there, I'm going to ask you. Restaurants or acting? Yes. Both. Restaurant तो है ही, so acting. Okay. Any funny pickup line tried on you, which didn't work? Of course. I don't remember. It's been ages, guys. No, I mean, you don't remember. There's so much thing happening in your life that याद ही नहीं आता. There are so many exciting events that happen in your life, and so many small events like that your memory fades. तो मुझे याद ही नहीं है actually. Okay. So, dream career or dream partner? Both. Cerebral is not going to agree on one thing, for sure. She wants the best of everything. Yeah, both. Okay. What is the best advice you have ever received and from whom? I don't know. I keep receiving advices from all friends, family. I follow a guru. So yeah, I'm always open to advices, and yeah, I can't say which is the best advice, but I give best advices to people. So yeah, No, that's put it like that. Yeah. Okay. What is your last Google search? I don't remember. You don't search on Google? I do so much कि मुझे याद है नहीं मैंने लास्ट क्या देखा था. मुझे जाके देखना पड़ेगा. Must be क्या शॉप करूँ मैं घर के लिए, यहाँ के लिए, ये देखा होगा मैंने लास्ट. Sometimes I check इंटरेस्टिंग कॉकटेल्स कैसे बन रही है, या ये सब मेरे सर्च में बहुत मिलता है. खाना बहुत मिलता है मेरे सर्च में. So that आते भी हो ऐसे सर्च ही करते? नहीं सर्च करती कि कौन सी चीज़ कैसी लग रही है. एक्साइटिंग लगता है ना वो, मेरे लुक्स गुड. बट ऑफ कोर्स आई थिंक मैं टेलीविजन या वेब मतलब नहीं देखती इतना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गूगल सर्च कर रही होती हूँ. और मुझे टैरो कार्ड से बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी देखती रहती हूँ. आज का टैरो कार्ड क्या बता रहा है. So it was amazing chatting with you. Yeah, amazing talking to you. I know. I know I'm so much fun. Thank you. But before you go, we would like to give you a small hand pump from our title sponsor. How lovely.
Thank you so much. This is a surprise. Thank I you. hope you really like what's inside. I will. Can I open it right now? Yeah, of course you can. तो ये था हमारा आज का धमाकेदार एपिसोड एक्ट्रेस सिंपल कॉल के साथ। सिंपल का ना सिर्फ एक्टिंग गेम ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट्स का गेम भी सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए आप प्रोवो ऐप पर जाइए और हमें वहां जाकर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सिंपल आने वाले 3 महीनों में कितने नए रेस्टोरेंट के ब्रांचेस खोलेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट बिलो और बताइए कि आप किस किस सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू इस शो में देखना चाहते हैं। ये जो एक्टिंग का कीड़ा है ये आपको लगभग किस उम्र में काटा और लगा कि भाई एक्टर ही बनना है? मैं बनना चाहता था डॉक्टर। मैंने जब देखा कि साइंस की फीस ज्यादा है, कॉमर्स की फीस कम है, तो मैंने अपना वो मूड वही मैसेज कर दिया। संदीप है, उनके भाई हैं कुलदीप आनंद जो एक काफी फेमस कास्टिंग डायरेक्टर भी है। सच कहूँ तो कोई रोल उसने मुझे आज तक ऑफर नहीं किया ना मैंने